हेलो फ्रेंड्स, हूँ छुं आरती धोळकिया। मारी चेनल रसोई आंगण में तमारुं स्वागत है। तो आज हूँ बनावानी छुं काला मच्छीनी रेसिपी, तो विडियो में बन्या रहेजो। तो तेने बनावा मैं अहीं आटली वस्तु लीधी है। डूंगળી सुधारी है, लसणवाળી खांडेली चटणी है, आदू खेमणुं है, टमेटू खेमणुं है, कोथमीर सुधारी है, बधा मसाला है। तो आ छे आपणी मच्छी। तो तेने बनावा मैं एक कढ़ाई लीधी है। तो आपणे तेमां तेल गरम थवा मूकी देशुं। 3 થી 4 पावरा तेल नाखशुं। तेल गरम थाय पछी आपणे डूंगळीनो वघार करशुं। तो तेल आपणुं गरम थई गयुं छे। तो हवे आपणे चपटी हींग नाखशुं, पछी डूंगળી नाखशुं। तो डूंगળી આપણે હલકી બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી હલાવશું, પછી આપણે ટમેટા નાખશું। તો ડુંગળી આપણી હલકી બ્રાઉન થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે ટમેટું નાખશું। આ છે આદુ। तो हवे आपणे बधा मसाला नाखशुं। 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर है, अर्धी चमची हळदर पाउडर है, खांडेली चटणी है लसणवाળી, मीठुं स्वाद प्रमाणे, अर्धी चमची गरम मसालो, थोड़ुं पाणी नाखी हलावशुं। तो मसालो अपने तेल छूटू पड़े त्या सुधी हलावशुं, पछी आपणे तेमां मच्छी नाखशुं। तो तेल आपणुं छूटू पड़ी गयुं छे, तो हवे आपणे तेमां मच्छी नाखशुं। तो आ छे ईंडेर।
તો હવે આપણે પાણી નાખી 10 મિનિટ ચડવા દઈશું. કોથમીર નાખીને ઢાંકી દેશું. તો મચ્છી આપણી ચડી ગઈ છે, તો હવે આપણે ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.